Congratulations, Bilal. I got to know that you have written a rhyme. Is it so? Yeah, Matt, it's so. Then go on and just tell me. Well, it's my first rhyme. I don't think so that it's interesting. Oh, come on, Bilal. I know you are a gentleman. It will be interesting. Just speak up. I can't wait anymore. But in one condition, if you will make my viewers understand to interpret in Urdu. Okay, as you're concerned, so. Well, it's all about love. If you have fallen in love, then you will love it. Oh, Bilal, you are making me angry. Just make haste. Haste makes waste. So, just hold your heart and listen. My rhyme crux is love in depth. Sounds great. Yeah, just go on, man. What are the perfections of your breathtaking eyes? इसका मतलब है तुम्हारी दिलनशी आंखों के क्या कमालात हैं? When I take a glance, they get me in dive. जब मैं उन्हें देखता हूँ तो वो मुझे गहराई में डाल देती हैं. You may be not aware when I see them live. तुम्हें क्या खबर हो कि जब मैं उन्हें लाइव देखता हूँ. They make me feel as if I'll not stay alive. वो मुझे ऐसे फील करवाती हैं कि अब मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा. Let me stay with you by your side. बस मुझे अपने साथ रहने दो. My whole feelings and emotions are hide. मेरी सारी फीलिंग्स, एहसासात और जज्बात छुपे हुए हैं. Oh my goodness, you are so romantic person. Just keep going. For a moment, put this case aside. चलो एक लम्हे के लिए इस केस को साइड पे रखते हैं. To see her sleek and glossy lips, what I've tried. उसके चमकदार और नरमो मुलायम होंठ देखकर मैंने क्या करने की कोशिश की. I thought I should have to give her a ride. मैंने सोचा कि उसे मुझे अपने साथ ले जाना चाहिए, उसे कोई राइड देनी चाहिए, कंपनी देनी चाहिए. To just think about that moment, my heart cried. बस ये लम्हा सोचकर ही मेरा दिल रो पड़ा. You are making me cry too. Well, I got to know that her heart is so wide. खैर मुझे पता चला कि उसका दिल बहुत बड़ा है. To understand her heart, I need a guide. और उसे समझने के लिए मुझे एक गाइड की ज़रूरत है. Until now, I'm utterly unaware of where she resides. अभी तक मैं बिल्कुल बेखबर हूँ कि वो रहती कहाँ है. I'll cast a spell on her like this. She will be by my side. मैं उस पर कुछ ऐसा जादू करूँगा कि वो मेरी हो जाएगी. When I kept an eye on her standing hair, it was untied. जब मेरी नज़र उसके सिल्की बालों पर पड़ी तो वो खुले हुए थे. To see this tragedy, hundreds of like me get surprised. ये लम्हा देखकर 100 मेरे जैसे हैरान हुए. Oh Bilal, my heart is melting. So, do I need to stop utterance? No, not at all. Just let me know in whose history is love denied. बस मुझे सिर्फ इतना बताओ कि किसकी तारीख में प्यार मना है. This insane imagination is making my mind divide.
ये पागलपन तख़य्युलात मेरे जहन को तकसीम कर रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मेरा माइंड डिवाइड हो रहा है। In every single life, love has been derived. हर एक ज़िंदगी में प्यार मुकर्रर हो चुका है, यानी लिख दिया गया है। Ask them the value of love who have been fried. इसकी कदर उनसे पूछो जो इसमें जल चुके हैं, जो इसका शिकार हो चुके हैं। You know, many lovers in love have died. क्या तुम्हें पता है कि कितने आशिक प्यार में मर गए हैं? Thank goodness she doesn't make me fool by makeup applied. चलो ये तो अच्छा है कि वो मुझे बेवकूफ़ नहीं बनाती अपने नकली चेहरों से कोई मेकअप से। Oh dear, dear, make me your student. Thanks for your compliments. I respect your words. You're welcome and you deserve it.